CSS results are out and the performance of students has been dismal. More than 30,000 appear on the test, but only a few hundred have passed the exam. From this scant number, there will be people left to be allocated because of a short number of seats. Given the result and resources spent on this test, it seems CSS has become a curse for the country than a solution. More importantly, given this context of time, it is an outdated way of hiring public servants for running the machinery of the state for the fact that it is draining the resources of students who are capable of aiding society as good teachers, as researchers, as doctors and as engineers are appearing in this test, leaving their professions for the sake of perk and privileges. Every year, thousands of candidates appear in the CSS test, from engineers to doctors to social science students. They invest their energies in this test for years. Despite being outstanding in their professions, they want to become CSPs because they know this is the only way to satisfy their family needs and overcome social pressure. They also know the fact that they cannot be respected in their society until they crack CSS or PMS. For these reasons, they want to crack these tests, depriving society of good modern doctors, engineers and teachers, and so on and so forth. Despite being outstanding in their professions, many want to become CSPs because this is the only way to satisfy their family needs and overcome social pressure. This trend is not only dangerous for society but also for the state for the reason that those who can develop a soft image of Pakistan by studying its culture, traditions and history are not doing their job. Those who can nurture the upcoming generation as teachers are careless about the future of this country, and above all, those who can work as a researcher to enhance political and social discourse based on social problems are not providing the cures to the socio-political ills of this country. Everyone is doing someone else's job, exacerbating the crisis of the state. This is why tests like CSS and PMS are more problematic for a country like Pakistan, where every person from the middle class want to pass it to change his or her class. Another reason why Pakistan is suffering economically is that it has failed to produce highly educated economists who can lead the country out of the economic crisis with locally based economic solutions. Had Pakistan developed good economists, Pakistan would have been far better in terms of exporting its local products and creating their worth in the international market. It is not that Pakistan has nothing to sell to the world. Rather, it has everything to sell to the world as it has resources, minerals and tourism points. It can attract the attention of the world if they are presented amicably to the international markets. For that, economic vision is required with experts in place in every department from the mineral sector to education and local businesses. That is why Pakistan has to shift its talent to other sectors of the state instead of putting its all eggs in the basket of bureaucrats who come to rule us cramming a few notes. More than anything else, Pakistan needs social scientists who can analyze our societal and state issues and provide us with evidence based on solutions. For that, Pakistan needs to focus on the educational sector and produce good quality and evidence-based research. This can only be achieved via spending in the sector of education. Until Pakistan focus on resource building via schools, colleges and universities, ours will be a barren land with ghosts of educational institutions everywhere failing to add value to society. Until Pakistan gives equal respect to its teachers as it is given to mere technical bureaucrats, it will suffer in the longer term. Moreover, it is known to us all that Pakistani cities are crumbling. Their infrastructure is rusted, failing to accommodate its public. Buildings are being built everywhere without thinking, resulting in damage to the climate and public places at the same time. This is a big failure on the part of the engineers that the country is producing. It is therefore Pakistan needs to focus on producing talented and skilled engineers rather than providing a way for them to induct into administrative services via CSS or PMS. For every department of life, there should be a test like CSS so that every person in every profession can serve the state in the right manner. Hiring engineers or doctors in administrative services is no less a disaster. Pakistani policymakers and its government thus need to think along these lines. Last but not the least,
CSS as a test is a curse, for it has created a herd mentality in our students who can otherwise serve as an asset to the state. The only way out of this crisis is to give respect to every profession by conducting similar standard tests that are in place for CSS or PMS. Leaving the nation to the romanticization of CSS, as shown by CSPs via social media, would incur further damage. The writer is a freelance columnist. For more videos, subscribe. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. CSS के नताइज सामने आ चुके हैं और तलबा की कारकर्दगी मायूस कुन रही है। 30,000 से ज़ायद अफराद टेस्ट में शरीक होते हैं, लेकिन सिर्फ चंद सौ ही इम्तिहान पास कर पाए हैं। इस कलील तादाद से नशिस्तों की कम तादाद की वजह से लोगों को मुख्तस करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इस टेस्ट पर खर्च होने वाले नताइज और वसाइल को देखते हुए ऐसा लगता है कि CSS हद से ज़्यादा मुल्क के लिए लानत बन चुका है। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि वक्त के इस सियाक व सबाक को देखते हुए ये रियासत की मशीनरी को चलाने के लिए सरकारी मुलाजमीन की खिदमत हासिल करने का एक फरसूदा तरीका है, क्योंकि ये उन तलबा के वसाइल को ख़त्म कर रहा है जो मुआशरे की मदद करने की सलाहियत रखते हैं, जैसे अच्छे असातिज़ा, मुहक्किकीन, डॉक्टरों और इंजीनियरों के तौर पर इस इम्तिहान में शामिल हो रहे हैं। मुराद की खातिर अपने पेशों को छोड़ना। हर साल हजारों उम्मीदवार CSS टेस्ट में शामिल होते हैं, इंजीनियर से लेकर डॉक्टरों से लेकर सोशल साइंस के तालिब इल्मों तक। वो सालों तक इस इम्तिहान में अपनी तवानाइयां सिर्फ करते हैं। अपने पेशों में शानदार होने के बावजूद वो CSP बनना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये उनकी खानदानी ज़रूरियात को पूरा करने और मुआशरती दबाव पर काबू पाने का वाहिद तरीका है। वो इस हकीकत को भी जानते हैं कि जब तक वो CSS PMS को तोड़ नहीं देते, तब तक उनके मुआशरे में उनका एहतराम नहीं किया जा सकता है। इन वजूहात की बना पर वो इन इम्तिहानात को तोड़ना चाहते हैं, मुआशरे को अच्छे जदीद डॉक्टरों, इंजीनियरों और असातिज़ा से महरूम करना चाहते हैं, और इसी तरह वगैरह। अपने पेशों में शानदार होने के बावजूद बहुत से लोग CSP बनना चाहते हैं, क्योंकि ये उनकी खानदानी ज़रूरियात को पूरा करने और मुआशरती दबाव पर काबू पाने का वाहिद तरीका है। ये रुझान न सिर्फ मुआशरे के लिए बल्कि रियासत के लिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान की सकाफत, रवायात और तारीख़ का मुताला करके इसका साफ इमेज तैयार कर सकते हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे। जो लोग आने वाली नस्ल को असातिज़ा के तौर पर परवान चढ़ा सकते हैं, वो इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में लापरवाह हैं, और सबसे बढ़कर वो लोग जो समाजी मसाइल की बुनियाद पर सियासी और समाजी गुफ्तगू को फ़रोग़ देने के लिए एक मुहक्किक की हैसियत से काम कर सकते हैं, वो इस मुल्क की समाजी और सियासी बुराइयों का इलाज फराहम नहीं कर रहे। हर कोई किसी और का काम कर रहा है, जिससे रियासत का बहरान बढ़ रहा है। यही वजह है कि CSS और PMS जैसे टेस्ट पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ज़्यादा परेशानी का बाइस हैं, जहां मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स अपनी क्लास को तब्दील करने के लिए इसे पास करना चाहता है। पाकिस्तान के माशी तौर पर मुश्किलात का शिकार होने की एक और वजह यह भी है कि वो आला तालीम याफ्ता माहिरीन इक्तिसादियात पैदा करने में नाकाम रहा है, जो मकामी सतह पर माशी हल के ज़रिए मुल्क को माशी बहरान से निकाल सकी। अगर पाकिस्तान ने अच्छे माहिर मुआशियात तैयार किए होते तो पाकिस्तान अपनी मकामी मसनूआत बरामद करने और बैन अल-अक़वामी मार्केट में उनकी कदर पैदा करने के मामले में कहीं बेहतर होता। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास दुनिया को बेचने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इसके पास दुनिया को फ़रोख्त करने के लिए सब कुछ है, क्योंकि इसमें वसाइल, मदनियात और सियाहत के मकामात हैं। ये दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता है अगर उन्हें बैन अल-अक़वामी मंडियों में खुश असलूबी से पेश किया जाए। इसके लिए मादनी शोबे से लेकर तालीम और मकामी कारोबार तक हर शोबे में माहिरीन की मौजूदगी में माशी विजन की ज़रूरत है। यही वजह है कि पाकिस्तान को अपने तमाम अंडे ब्यूरोक्रेट्स की टोकरी में डालने के बजाय रियासत के दीगर शोबों में अपनी सलाहियतों को मुंतकिल करना होगा, जो चंद नोटों के साथ हम पर हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। किसी भी चीज़ से बढ़कर पाकिस्तान को ऐसे समाजी साइंसदानों की ज़रूरत है जो हमारे मुआशरती और रियासती मसाइल का तज्जिया कर सकें और हमें हल पर मबनी सबूत फराहम कर सकें।
इसके लिए पाकिस्तान को तालीमी शोबे पर तवज्जो देने और अच्छे मेयार और शवाहिद पर मबनी तहकीक तैयार करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ तालीम के शोबे में खर्च के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। जब तक पाकिस्तान स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के ज़रिए वसाइल की तामीर पर तवज्जो नहीं देता, हमारी सरजमीन एक बंजर ज़मीन होगी जहां हर जगह तालीमी इदारों के भूत मुआशरे की कदर और कीमत बढ़ाने में नाकाम रहेंगे। जब तक पाकिस्तान अपने असातिज़ा को इतना ही एहतराम नहीं देता जितना कि महज टेक्निकल ब्यूरोक्रेट्स को दिया जाता है, इसे तवील मुद्दत में नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा यह हम सबको मालूम है कि पाकिस्तानी शहर टूट रहे हैं। उनका बुनियादी ढांचा जंग आलूद है, जो अपने अवाम को एडजस्ट करने में नाकाम रहा है। इमारतें बगैर सोचे समझे हर जगह तामीर की जा रही हैं, जिसके नतीजे में एक ही वक्त में आबो हुआ और अवामी मकामात को नुकसान पहुंच रहा है। ये इन इंजीनियरों की तरफ से एक बड़ी नाकामी है जो मुल्क तैयार कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को CSS के जरिए इंतजामी खिदमात में शमूलियत का रास्ता फराहम करने के बजाय बासलाहियत और हुनरमंद इंजीनियर्स तैयार करने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिंदगी के हर शोबे के लिए CSS जैसा इम्तिहान होना चाहिए ताकि हर पेशे में हर शख्स सही तरीके से रियासत की खिदमत कर सके। इंतजामी खिदमात में इंजीनियर्स और डॉक्टरों की खिदमत हासिल करना किसी आफत से कम नहीं है। लिहाजा पाकिस्तानी पॉलिसी साजों और उसकी हुकूमत को उन खतूत पर गौर करने की ज़रूरत है। आखिरी लेकिन कम से कम नहीं, CSS एक इम्तिहान के तौर पर एक लानत है, क्योंकि इसने हमारे तालिब इल्मों में एक रिवर जहनियत पैदा की है जो दूसरी सूरत में रियासत के लिए एक असासा के तौर पर काम कर सकते हैं। इस बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता यह है कि CSS के लिए इसी तरह के मियारी टेस्ट मुनक्किद करके हर पेशे का एहतराम किया जाए। कौम को CSS की रोमानवियत पर छोड़ना, जैसा कि सोशल मीडिया के जरिया CSP के जरिया दिखाया गया है, मजीद नुकसान उठाएगा। मजमून निगार फ्रीलांस कालम निगार हैं। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.